रोहिणी। आज मैं आप सभी का इस वेबिनार में स्वागत करती हूँ। ये वेबिनार आप सभी को एसओएससी के बारे में जानकारी देने के लिए एसओएससी सेक्टर 17 के बच्चों ने ऑर्गेनाइज किया है और इस वेबिनार के जरिए आप सभी को एसओएससी में किस प्रकार करिकुलम चलता है, किस प्रकार एडमिशन लिया जाता है, किस प्रकार एप्टीट्यूड टेस्ट का पैटर्न क्या होता है और हमारे सेक्टर 17 में क्या-क्या फैसिलिटीज हैं स्टेम और ह्यूमैनिटीज को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इन सभी के बारे में हमारे स्टूडेंट्स आपको बताएंगे। तो मैं समय को ना वेस्ट करते हुए तितिक्षा हमारे ही एक स्टूडेंट तितिक्षा से अनुरोध करूंगी कि वो सेशन को आगे बढ़ाएं। ओवर टू यू तितिक्षा। Thank you, ma'am. Hello, everyone. Welcome to SOSC Sector 17's webinar. This is Titiksha from grade 11. और आज हम एक खास वेबिनार में हैं जहां पे हम डिस्कस करेंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस सेक्टर 17 के बारे में। हमारे एजुकेशन सिस्टम का गोल है कि हम आपको तैयार करें एक ऐसी दुनिया के लिए जो हमेशा इवॉल्व होती रहती है। आज हम स्टेम के सब्जेक्ट्स जैसे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की ब्रीफिंग करेंगे, ह्यूमैनिटीज की मैजिकल दुनिया में जाएंगे और बहुत कुछ बताएंगे, जैसे हमारी अचीवमेंट्स, एडमिशन प्रोसेस, सब्जेक्ट एंड डीबीएससी का ओवरव्यू देंगे एंड वील गिव यू द स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन ताकि आपको सारी डिटेल समझ आए। आपके क्वेश्चंस आर मोर देन वेलकम क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हर एस्पेक्ट को समझ सकें। Keep posting your doubts and queries in the chat box. Now to brief you about DBSE, we have Tanu Singh. Over to you, Tanu. Thank you so much, Pratiksha. I am Tanu Singh, student of grade 11 in ASOSC Sector 17, Rohini. मैं आपको DBSE that is Delhi Board of School Education के बारे में ओवरव्यू देना चाहूंगी and also telling you about what is so unique about DBSE जो स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड में एक्सेल करने के लिए तैयार करता है। अब तक आप जहां भी स्टडी कर रहे होंगे यू माइट हैव नोटिस कि जो असेसमेंट सिस्टम मेनली मार्क्स बेस्ड एग्जाम पे डिपेंड करता है जो सेमेस्टर के एंड पे होते हैं। इससे आप सभी का पूरा ध्यान रोड लर्निंग एंड चैप्टर्स को याद करने पर होता है। एग्जाम्स के स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया उससे तो आप सभी अवेयर होंगे, स्पेशली स्टूडेंट्स जो हाई स्टेक बोर्ड एग्जाम्स देते हैं। आई एम श्योर उस टाइम जो स्ट्रेस लेवल इज एट पीक, रात रात जग कर स्टडी करना आप सभी ने एग्जाम से पहले एक्सपीरियंस तो किया ही होगा, जो कि डेफिनेटली हमारे वेल बीइंग को भी इम्पैक्ट करता है। असेसमेंट को रेगुलर टीचिंग लर्निंग का एक हिस्सा बनाने और सिर्फ स्टूडेंट की प्रोग्रेस इवेलुएट करने पर लेस फोकस करने ध्यान से डिजाइन की गई असेसमेंट स्टूडेंट की प्रैक्टिकल, क्रिएटिव, एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में दिल्ली गवर्नमेंट ने डीबीएससी शुरू किया है। डीबीएससी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और सीबीएसई एंड दूसरे स्टेट बोर्ड के इक्विवेलेंट माना गया है। डीबीएससी नए असेसमेंट सिस्टम को सपोर्ट करता है जो स्टूडेंट की होलिस्टिक डेवलपमेंट को इनेबल करता है। इसका गोल है असेसमेंट की फोकस को शिफ्ट करना और स्टूडेंट को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट में तैयार करना। एएसएससी की कटिंग एज करिकुला के साथ स्टूडेंट को फ्यूचर के नए जॉब अपॉर्चुनिटीज और हायर एजुकेशन के लिए तैयार किया जाता है। द आइडिया इज स्ट्रेस फ्री लर्निंग, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट गेटिंग रेडी फॉर future challenges with great curriculum. This is something what makes DBSC stand out is futuristic world की scenario में. Now, Aditya Raj would elaborate about one of the DBSC's learning partner IB that is International Baccalaureate. Over to you, Aditya. Now over to you, Aditya.
Till then, Aditya Raj is joining us. Let me explain you all. Let me brief you all about STEM and humanities. So many of you must be aware about about these subjects, but let me give you a quick brief about them. So humanity is exploring world. Students of appearing for humanities will be selected through two stages aptitude assessment. The first stage will be the written exam, which will be including verbal reasoning, numerical reasoning, and logical reasoning. Students selected for the second stage will be required to participate in a group discussion. जिस ग्रुप डिस्कशन में आपको एक टॉपिक दिया जाएगा और पैनल होगी, आपको उस टॉपिक पे डिस्कस करना होगा एंड अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने होंगे. लेट्स टॉक अबाउट स्टेम. स्टेम हम सभी जानते हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स. यहाँ स्टूडेंट्स एक एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे, जहाँ हम मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करेंगे, मैथमेटिक्स एंड साइंस. ग्रेड 9 के एनरोलमेंट के लिए, एडमिशन के लिए हम ग्रेड 8 के लेवल के क्वेश्चंस को पूछा जाएगा और एडमिशन इन क्लास 11, टॉपिक्स ऑफ क्लास 10 विल बी आस्क्ड. So now I would like to give over to Yashika to explain you more about. Thank you, Yashasvi. I'll be telling you about Humanities School and our learning partners. Dr. B.R. Ambedkar School of Specialized Excellence for Humanities, ASOSC Humanities का एम छात्रों को ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस की शिक्षा प्रदान करना है, ताकि वे भविष्य के लीडर्स, इनोवेटर्स, रिसर्चर्स और टॉप ग्लोबल प्रोफेशनल्स बन सके. ह्यूमैनिटीज ASOSC's students को law, journalism, urban planning, teaching, civil services, content writing, public policy and social work से जुड़ी skills स्कूल में ही सिखाते हैं, जो भविष्य में उन्हें उनके करियर में मदद करेंगी. रिसर्च, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल एंड एनालिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, ये उनमें से कुछ स्किल्स हैं. स्कूल CUET जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कराता है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर लर्निंग पार्टनर्स. We have 3 learning partners for humanities in SOSC: Vasant Valley, Ashoka University and Tata Institute of Social Sciences. ये तीनों इंस्टीट्यूट्स सोशल साइंस में अपनी विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं. Let's discuss them in briefly. अशोका यूनिवर्सिटी, यह भारत में लिबरल आर्ट्स और सोशल साइंसेस के क्षेत्र में बढ़ रही यूनिवर्सिटीज में से एक है. यह अलग अलग स्किल्स में समझ हासिल करने में मदद करने में विश्वास रखते हैं. कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, इफेक्टिव कम्युनिकेशन and innovation for impact and change are some of the skills this institution focuses the most. Tata Institute of Social Sciences. This is a reputed university in India for social sciences. हमारे जितने भी स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स हैं, वाव और सिस्टम्स एंड सोसाइटी और आइडियाज, दिस ही डिजाइन और ऑपरेट करता है. वसंत वैली, यह इंस्टीट्यूशन लीडरशिप और बच्चों के कॉन्फिडेंस पर काफी ध्यान देता है. वसंत वैली बच्चों को इस काबिल बनाता है कि वे दुनिया के किसी भी जगह हो, वे अपनी चमक से इंडिया के बेहतरीन कल्चर को दर्शा सके. Now, my friend Titiksha will tell you about subjects in ASOSC Humanities. Over to you, Titiksha. Thank you, Yashika. So, hello again, people. अब हम बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट्स के बारे में. We have foundational subjects जो कि है English, हिंदी, साइंस, मैथमेटिक्स. इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज जो कि
सोशल साइंसेस ही है, बट आईबी के कॉन्टेक्स्ट में इसको इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज का नाम दिया गया है. एंड EMDD, which is entrepreneurial and design using design tools. ये सारे सब्जेक्ट्स आपको दुनिया को अंडरस्टैंड करने में और सक्षम बनाएंगे और उसके और करीब लाएंगे. यहाँ आपको बुकिश नॉलेज नहीं मिलेगी, बट अ प्रैक्टिकल अप्रोच, ताकि आप इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से समझ पाए. एंड टॉकिंग अबाउट EMDD, ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक एडवेंचर है जिसमें यू विल गेट टू क्रिएट यूजिंग डिजिटल टूल्स. एंड इसमें यू कैन कम अप विद योर ओन डिजाइन्स. और क्या पता SOSC में आने के बाद दुनिया के टॉप बिजनेसमैन में एक नाम आपका भी हो. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स. In humanities, we have two specialized subjects, which are systems and societies and world of work. तो अगर आपको लगता है कि दुनिया और सोसाइटी के सिस्टम्स आपको समझ नहीं आते हैं और ये आप समझना चाहते हैं, तो सिस्टम्स एंड सोसाइटीज आपके लिए है. इसमें यू विल गेट टू डाइव इनटू टॉपिक्स के बारे में समझने को मिलेगा. टॉपिक्स जैसे क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल रिलेशंस, मॉडर्न हिस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन. एंड गेस व्हाट, हम यहाँ अप्लाई करते हैं कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम साइंस, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. और अब आप सोचते तो होंगे ही कि बड़े होकर क्या बनूंगा. यही क्यूरियोसिटी हमें लेके आती है वर्ल्ड ऑफ वर्क के करीब. इसमें यू विल बी एक्सप्लोरिंग करियर पाथ्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस फॉर्म. कुछ ऐसा जिसके लिए आप पैशनेट तो जरूर होंगे. इट्स नॉट अबाउट लर्निंग, ये एक्सपीरियंस करने की बात है. वो एक्सपीरियंस करने की जो आपको पसंद है, चाहे वो ट्रांसमीडिया स्टोरी टेलिंग हो, पब्लिक पॉलिसी हो, अर्बन प्लानिंग हो, लॉ हो या जस्टिस हो, फील्ड ट्रिप्स, गेस्ट लेक्चर्स, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स, ये सारे आपको दिखाते हैं आपके ड्रीम करियर्स की दुनिया. और फिर आता है स्टेम का मैजिक, जिसे अनवेल करने के लिए वी हैव केशव. ओवर टू यू केशव. Thank you, Tatiksha. And good evening, I'm Keshav Jha, and I'm here to explain you about STEM. But before that, we need to know what is STEM. अगर हम STEM के full form की बात करें, that is science, technology, engineering and mathematics. As the name suggests, आप इसमें science and maths के बारे में basically सीखेंगे. What is science and maths? Basically, not the basic science and maths, also the advanced science and maths. We will discuss it after a couple of minutes. But before that, let's discuss about our knowledge partners. So the main knowledge partner of STEM is VMC, which is Vidya Mandir classes. And I'm sure you have heard about VMC because it is doing great in the field of science and maths for a very long time. From very beginning, it is doing great in the field of science and maths. And talking about achievements of ASC Sector 17 in science field. And you should, why only Sector 17 ASC for STEM? For that, we have achievements that no one can counter. 35 students in NEET, 35 students in JEE Mains, and a total of 8 students in JEE Advanced were selected in 2023, which is a big number as compared to any other school. So this is the answer why you should choose Sector 17 for STEM. And आप सभी को ये पता ही है कि किसी भी स्टूडेंट की सक्सेस में सबसे ज्यादा हाथ होता है his teachers. And अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता. The main thing is teachers. And जो teachers उस time थे, in the time when students were selected for one of the big institutes and big colleges like IIT Delhi, IIT Madras, IIT Kharagpur and many more. तो इनमें सबसे बड़ा हाथ है हमारे स्कूल का, our principal, our staffs as well as our labs assistants. Firstly, they're very good because they support us a lot, not only in education but also in our personal life. So अगर हम subjects की बात करें, तो first one is foundational subject. तो foundational subjects के बारे में आपको तितीक्षा ने बता ही दिया था. Now I will tell you about specialized subject, which is advanced science and advanced maths. And as the name suggests, it is not the basic maths or basic science. In this, you will be get to know about
more advanced things in maths and science. For example, in maths, you will get to know about trigonometry and arithmetic progressions in ninth class. And in science, you will get to know about quantum mechanics if you will be selected in STEM, that too in ninth class. So this was basically about STEM. And no need to explain what is STEM and why you should choose Sector 17, because the achievements can answer that why you should choose Sector 17. Now, Yashasvi will tell you about the achievements of ASOSC Sector 17. Over to you, Yashasvi. थैंक यू केशव। सो अभी मैं आप सभी को ASOSC सेक्टर 17 के स्टूडेंट्स की अचीवमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी। तो पहले हम जानते हैं न्यूज़ चैनल के बारे में। ASOSC सेक्टर 17 के स्टूडेंट्स खुद का न्यूज़ चैनल चला रहे हैं जिसका एक्सीलेंस 17। यहाँ पर हम हर एक डिग्नेटरीज जो भी अपकमिंग प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जो डिग्नेटरीज होती हैं, हम उनका इंटरव्यू लेते हैं या फिर कुछ भी प्रोग्राम्स को रिकॉर्ड करके, इवेंट्स को रिकॉर्ड करके अपलोड करते हैं। यहाँ पर इस न्यूज़ चैनल को चलाने में हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स, इंटरैक्टिव स्किल्स, लिसनिंग स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स तो अलग ही लेवल पर पहुँच गई हैं। अब बात करते हैं MUNC मॉडल यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो कुछ महीनों पहले विधानसभा में ऑर्गेनाइज हुई थी, जिसमें हमारा स्कूल भी एक पार्टिसिपेंट था। हमारे स्कूल से ही एंकर्स को चूज किया गया था बिकॉज ऑफ देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर हमारा कॉन्फिडेंस लेवल वाज वेरी मच बूस्ट अप। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनल मीडिया रिकॉग्निशन। हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को बहुत बार नेशनल मीडिया रिकॉग्निशन मिल चुकी है। हम अगर बात करें NDTV की, तो हाँ जी, हमें वहाँ पर भी नेशनल मीडिया रिकॉग्निशन मिली है। एक बार जब हमने 180 बुक्स पब्लिश करी थी थ्रू Bree Books। Second, when we were hosting some programs and we were peer teaching, then we were showcased on national media. From being showcased on national media, our interactive session, interacting with the reporters, was much a good experience. Next was something very interesting. We were given the 10th graders and 11th graders were given opportunity to appear for Ticket to France exam. Seems interesting, right? Yes, तो हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को, जो फ्रेंच लैंग्वेज के स्टूडेंट्स थे, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी। बेसिकली स्कॉलरशिप एग्जाम बोल सकते हैं, जो कि फ्रेंच के स्टूडेंट्स थे, उन्हें एक एग्जाम देने को मिला था, जिस एग्जाम के बेसिस पे वो उनको फ्रांस जाने की अपॉर्चुनिटी मिली थी। Now, the next achievement, which is quite big, that our school students were publishing their own books. हाँ जी, मैंने भी अपनी खुद की बुक पब्लिश करी है जिसका नाम है इट्सी बिट्सी आर्टी, जो कि विजुअल आर्ट को प्रमोट करती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपनी अपनी बुक्स करी हैं, एक नहीं दो नहीं, बल्कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो 3-4 बुक्स भी पब्लिश करी हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैथ्स मैगजीन्स। तो हमारा स्कूल क्वार्टरली बेसिस पे मैथ्स मैगजीन्स को रिलीज या पब्लिश करता है। जैसे हमारी अभी तक 3 मैगजीन्स आ चुकी हैं। मैथ स्पोर्ट मैगजीन, जिसमें हम बच्चों की राइटिंग स्किल्स, इनपुट स्किल्स, हम अपना इनपुट किस वे में दे सकते हैं, इनोवेटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग, लाइक वी टेक इनपुट्स फ्रॉम एवरी स्टूडेंट ऑफ एवरी क्लास, ताकि उनकी क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक अपग्रेडेशन मिले। Now let's talk about Ladli internship program. So in summer vacations हमें गर्ल्स को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम लाडली इंटर्नशिप असाइनमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम बहुत सारे कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स होस्ट करते थे, पार्टिसिपेट करते थे, जिससे हमारी लीडरशिप स्किल्स बूस्ट अप होती थी। एंड हम उसमें बहुत बेसिकली हमारा टॉपिक माल न्यूट्रिशन था, तो हम लोगों को स्लम एरियाज में जाके लोगों को अवेयर करते थे कि what is malnutrition, and like it was basically a community project. So now let's talk about buddy system. buddy system एक ऐसा दोस्ती का सिलसिला है जहाँ सीनियर्स नए करिकुलम में एडजस्ट करने में मदद करते हैं। CBSE से DBSE का स्विच और रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स से लेकर हर मुश्किल को आसान बनाते हैं। ये सीनियर्स नए स्टूडेंट्स के लिए न सिर्फ एकेडमिक हेल्प करते हैं, बल्कि उन्हें स्कूल के माहौल में भी सेट होने में मदद करते हैं। हर सवाल का जवाब, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये बडी सिस्टम है। नाउ हमने बडी सिस्टम के बारे में तो बात कर ली, और मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जब मैं स्कूल में नई आई थी तो मुझे DBSE की करिकुलम में एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट फिर जो मेरे बडीज थे, अंशिका दी एंड प्रतीक्षा दी, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी। जैसे हम सबको अपने अपने बडीज अलॉट होते हैं,
रेजिडेंशियल एरिया वाइज एंड बहुत सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखकर। तो उन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प करी इस करिकुलम में एडजस्ट करने में, आगे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने में, और कैसे हम लाइक मैं सेक्टर 20 से आ रही थी तो वहाँ की रेजिडेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इट वाज ऑल इन ऑल अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस विद बड़ी सिस्टम। अगर मैं कहूँ हमारे स्कूल में हमें एक फ्री स्पेस मिलती है कि हम कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे आई विल गिव यू अ रेफरेंस, हमारे स्कूल में एक क्रिएटिव रूम है जहाँ पे हम अपनी कुछ भी क्रिएटिविटी को शोकेस करते हैं, वेदर इट्स ग्राफिक डिजाइनिंग, डांसिंग, ड्राइंग, हमने कोई मॉडल बनाया है एंड वी वांट इट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, सो वी explore and showcase everything that we want in conclusion I would say that these achievements are really one of the booster point for our school. So I would like to know कि आप सभी को कैसा लगा बड़ी सिस्टम के बारे में जानकर, if you could answer in that. So now I would like to hand over to Jia for admission process details. Thank you, Yashashvi. Hello, everyone. I am Jia Singh from 9C, and today I am going to explain you the Humanities admission test. So let's start. अगर हम blueprint की बात करें Humanities admission test की, तो Humanities admission test दो rounds में divided है, first round and second round. तो चलिए first round की बात करते हैं. और अगर हम first round की बात करें, तो mainly first round चार चीज पर बेस्ड ऑफ होता है: रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड केस स्टडी. सो लेट्स स्टडी अबाउट देम इन डिटेल्स. सो अगर हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो उसमें बेसिकली आपको एक टेक्स्ट या फिर एक पैसेज दे दिया जाएगा एंड उसमें आपको आइडेंटिफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्स्ट एंड उसके लिए आपकी ग्रामर एंड पंक्चुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग करनी होगी आपकी, ताकि आपको अच्छे लेवल्स मिले उसमें. एंड सेकेंड आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग. सो लॉजिकल रीजनिंग में बेसिकली नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग आ जाती है. आप ये पूरा लॉजिकल रीजनिंग जो बेस्ड ऑफ होता है इसी पर, तो आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होना चाहिए. एंड अगर हम थर्डली बात करें तो ये डेटा इंटरप्रिटेशन. डेटा इंटरप्रिटेशन में बेसिकली आपको एक पर्टिकुलर चीज पर आपको एक डेटा प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड उसमें आपको एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा दैट यू हैव टू कंपेयर द डेटा, और स्टैटिक्स आपको निकालना जैसे मीन, मीडियम, मोड, ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन में आ जाता है. फिर फोर्थ हो गया हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन. सो एक्चुअली केस स्टडी में आपको एक पूरा केस स्टडी दे दिया जाएगा एंड इस साल के हमारे टॉपिक्स हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन: laws and social justice, why do we need parliament, globalization of Indian economy, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources, when people rebel, 1857 to 1947. ये आपके इस साल के टॉपिक्स है. इनमें से एक का आपको एक पूरा पैराग्राफ या फिर दे दिया जाएगा केस स्टडी एंड उसी से रिलेटेड आपको एमसीक्यू मिलेंगे. एंड हम रिपीटिंग इट अगेन, जो आपका राउंड वन होगा वो रिटन टेस्ट है बट वो पूरा एमसीक्यू बेस्ड होता है. तो केस स्टडी में आपको कुछ बाहर से नहीं पूछा जाएगा, उसी से रिलेटेड होगा. एंड दिस वुड बी द होल थिंग. एंड अगर आपका जब राउंड वन अगर आपको क्लियर हो जाता है देन आपको राउंड टू का एडमिट कार्ड मिलता है. तो राउंड टू में बेसिकली ग्रुप डिस्कशन होते हैं. ग्रुप डिस्कशन में बेसिकली 6 to 8 स्टूडेंट्स अलाउड होते हैं एक रूम में एंड उसमें हर स्टूडेंट को 4 to 5 मिनट्स मिलते हैं एक टॉपिक पर बात करने के लिए. एंड एक टॉपिक पे आपके कहते हैं आपको बोला जाता है एंड उसमें आपको अपना फेवर पे रखना होता है या फिर अपना अगेंस्ट पे रखना होता है आपको अपना टॉपिक पे ओपिनियन. एंड इसके लिए आपके क्या होते हैं, जो स्पीकिंग स्किल्स होती है वो मेन होती हैं इसमें. एंड ऑल यू हैव टू डू इज दैट आपको जो स्टार्टिंग स्टेटमेंट एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट होता है वो उसमें बहुत इफेक्टिव होना चाहिए ताकि आपको अच्छे स्कोर मिले. एंड अगर हम दोनों को काउंटिंग मार्किंग सिस्टम करते हैं तो राउंड वन में बेसिकली 70% मार्क्स कवरेज होता है एंड राउंड टू में 30% मार्क्स कवरेज होता है. एंड इन दोनों के मार्क्स ऐड करके आपका ह्यूमैनिटीज एडमिशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है. सो इसी के साथ एडमिशन टेस्ट मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया इस साल का. So let's talk about my experience from the previous years. तो as I per remember ना, जब मैं गई थी एग्जाम देने वो ह्यूमैनिटीज का लास्ट ईयर, देन फर्स्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बेसिकली मुझे एक टेक्स्ट मिला था, वो बिल्कुल अनसीन पैसेजेस के बारे में था. उसमें मुझे पहले ही दे रखा था एंड उसको रीड करके मुझे एमसीक्यूज फिल करने थे. वो बहुत ही ईजी था. जैसे अनसीन पैसेजेस होते हैं वो आपको पढ़ना आना चाहिए एंड इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी चाहिए और आपका वन फर्स्ट जो पार्ट है वो बहुत ईजी है.
जाएगा। एंड सेकेंड, लॉजिकल रीजनिंग में जैसे मैंने आपको बताया वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग हो जाती है। उसमें बेसिकली ऐसा कुछ रिमेंबर मेरे से पूछा गया था, इफ ए इज द फादर ऑफ बी, B is the mother of C is the daughter of G, was the relationship in between G and A? So आपको basically ऐसे questions मिल जाएंगे, या फिर if teacher stands for P U B C, then what does principal stands for? ये आपके logical reasoning के अंदर आ जाएंगे। And third हो गया हमारा data interpretation. And as per I remember, मुझे data interpretation में climate के ऊपर दिया गया था। मुझे दिल्ली के कुछ cities का climate बताया गया था, and मुझे बोला गया था उनके statics को compare करना। एंड उससे रिलेटेड मेरे को लाइक एमसीक्यूज दिए गए थे, एंड आई हैव करेक्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड ऑल। एंड देन द फोर्थ, केस स्टडी। सो केस स्टडी बेसिकली मुझे पूरा पैराग्राफ मिला था चंपक मूवमेंट पे, एंड उसी से रिलेटेड मुझसे एमसीक्यूज पूछे गए थे, व्हिच वाज रियली इजी। सो आई कैन से दैट इफ यू प्रिपेयर वेल देन इट वुड बी सो गुड। एंड बाय दिस आई वुड लाइक टू एंड माय टॉपिक, एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट Yashashvi to talk about the facilities that are provided in our school. Thank you, and I hand it over to you, Yashashvi. Thank you, Dia. So let me brief you all about the facilities of school. स्कूल में एक रंगीन संसार है जहाँ हर कोना एक अलग दुनिया। RE लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब और केमिस्ट्री लैब में विद्यार्थी अपने विचारों और दृष्टि को प्रकट करते हैं। एस्ट्रोनॉमी लैब में सितारों की दुनिया की खोज होती है और कंप्यूटर लैब में तो टेक का जादू होता है। जापानीज, फ्रेंच और जर्मन क्लासेस में भाषा का ज्ञान बढ़ता है, जबकि फ्रेंच लैंग्वेज लैब में तो प्रैक्टिकल भी होता है। बास्केटबॉल कोर्ट और जिम में फिटनेस का धमाल होता है और लिफ्ट से हर मंजिल आसान हो जाती है। CWSN रूम में स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स का ध्यान रखा जाता है और क्रिएटिव रूम में कल्पना का सफर शुरू होता है। NCC और मेडिकल रूम देशभक्ति और स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार हैं। EVGC रूम काउंसलिंग रूम में माहौल का संपन्न होता है। लाइब्रेरी में ज्ञान का सागर है और स्पोर्ट्स रूम में खेल कूद का जुनून है। ये सब मिलकर एक शिक्षा संस्था को सजीव और वाइब्रेंट बनाते हैं। कैसा लगा ये सफर? Now I would like to hand over to Aditya Raj for explaining you all about International Baccalaureate, in short IB. थैंक यू यशस्वी। नाउ मैं आदित्य राज, कक्षा 11वीं का स्टूडेंट, आपको आईबी के बारे में बताना चाहूंगा। आईबी इंटरनेशनल बैकलॉरेट, ये दिल्ली बोर्ड के साथ पार्टनरशिप में एक ऐसा इनिशिएटिव है ताकि एक ऐसा करिकुलम क्रिएट हो सके जो इंटरनेशनल कंपटीशन के साथ भी compete कर सके, उनको मैच कर सके। इसके थ्रू जो मेन फोकस रहता है वो एजुकेशनल फिलॉसफी पे रहता है एंड कैसे स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाए ताकि उनमें एनहांसमेंट आ सके, उनको और बेहतर बनाया जा सके। आईबी बस स्टूडेंट्स तक नहीं बल्कि टीचर्स को भी प्रोत्साहित करता है ताकि वह ग्लोबल लेवल पे चीजों को एक क्लासरूम में लाके पढ़ा सके, उनके बारे में बच्चों को सिखा सके और बच्चों से तो रिटर्न या फिर बस पढ़ाई को याद करने से नहीं, प्रैक्टिकल चीजों से आए। आईबी के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज पे भी बहुत फोकस किया जाता है, जैसे पॉलिटिकल साइंस की बहुत सारी चीजें हिस्ट्री या जियोग्राफी से भी कनेक्टेड होती हैं। तो इनको साथ में लेके कैसे पढ़ना है, एक बच्चे का कॉन्सेप्ट कैसे बिल्ड करना है ताकि वो चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, ये आईबी का करिकुलम हमें सिखाता है। इसके इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू बहुत सारे टाइप के इसमें असेसमेंट भी डाले जाते हैं, जैसे स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को Now basically I would like to share my experience. मैं इस स्कूल में 9th से हूँ एंड आई एम इन 11th। मुझे 2 साल हो गए हैं स्कूल में। एंड जब मैं पहले पहले सीबीएसई से डीबीएसई में जो ट्रांजिशन फेज था उसमें थोड़ी सी
हाँ, ये नहीं बोलूंगी बहुत ज्यादा इजी था या अच्छे तरीके से हो गया था, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आई थी, बट स्टाफ एंड टीचर्स ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है मेरी स्कूल में एडजस्ट होने में। एंड बस थोड़ा बहुत ही टाइम लगा था, उसके बाद एवरीवन इज सो फ्रेंडली कि पता ही नहीं चला कि मैंने 9th में स्कूल भी चेंज करा था। बस ऐसा लग रहा था कि मैं शुरू से Hello guys. So as I can see in chat, मेरे पास questions, हमारे पास questions आ रहे हैं कि what about like group discussion? उसमें कैसे topics होंगे, या हम उसमें इंग्लिश में बोल सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं, मतलब कहीं ना कहीं झिझक होती है नए पर्सन के सामने या नए बच्चों के सामने बोलने में। तो जैसे कि हम बात करें तो हमारा जो ग्रुप डिस्कशन है दैट विल बी ऑन सोशल प्रॉब्लम्स और सोशल टॉपिक्स जो हैं, जैसे कि जेंडर इक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, इन सब के ऊपर हमारा ग्रुप डिस्कशन होगा, जिसमें आप सभी को बोलने का मौका दिया जाएगा। उसमें अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में कंफर्टेबल आप इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो द टीचर इज देयर टू सी योर कॉन्फिडेंस लेवल। वो देखने देखने के लिए है कि वो आपको कैसे जांचें, आप कैसा बोलते हैं, व्हाट इज द लैंग्वेज यू यूज। और डरने की कोई बात नहीं है। मैंने जितने भी बच्चों से बात की है, या मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूं तो बहुत इजी होता है। यू जस्ट हैव टू कीप योर व्यूज इन फ्रंट ऑफ अदर्स, दैट्स सिंपल। डरना मत। So we have received one question in chat that psychology humanities में नहीं होती और blueprint of STEM. So let's talk about them first. So psychology is in humanities and you get a lot of choices in the subjects and you get a particular subject in level जिसके अंदर you get a combined of sociology and many more subjects as well. And the blueprint of STEM is quite similar to humanities. Like you'll get a reasoning part where logical reasoning, verbal reasoning will be asked, and after that you'll get a data interpretation in which you'll be given you'll be given a data and you have to interpret that and answer the following questions. उसके बाद आपको कुछ एडवांस्ड मैथमेटिक्स और एडवांस साइंस जो कि 8th के ही लेवल के होंगे, और अगर आप 11th में अपियर कर रहे हो तो 10th के लेवल के होंगे जो आपने पढ़ा है, तो उसके बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, यू हैव टू आंसर देम, एडवांस साइंस और एडवांस मैथमेटिक्स, एंड या देयर इज अ नेगेटिव मार्किंग also. You can be bilingual in group discussion. The panel is there to check your confidence level. How confident are you? आप कितने confident हो about speaking on any topic.
So now coming back to my experience in ASOSC Sector 17, Rohini, as a fresher, I'm in ninth grade only, and I am also a fresher. तो ASOSC Sector 17 में CBSE to DBSE का स्विच करना बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है, थोड़ी चैलेंजिंग है, बट बड़े सिस्टम के साथ इट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग एंड ईजी। लेकिन आपको एक नया लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है वेयर यू आर फ्री, आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, टू ग्रैब मोर अपॉर्चुनिटीज, वेदर इट्स किसी नेशनल मीडिया में रिकॉग्नाइज हो रहे हो, अपना बुक पब्लिश कर रहे हो। लाइक इफ आई पर्सनली टॉक अबाउट माई सेल्फ, आई हैव पब्लिश मेरी एक बुक मैंने पब्लिश करी है। आई हैव ऑल्सो फीचर्ड ऑन NDTV जो एक न्यूज़ चैनल है। आई एम ऑल्सो, मैं एक एंकर की तरह भी काम कर रही हूँ हमारे स्कूल के न्यूज़ चैनल में विच इज़ Excellence 17, and I've explored much more things also. So it is a very interesting journey. एक बार आप अडेप्ट हो जाते हो उस एनवायरनमेंट में, टेकिंग हेल्प फ्रॉम बडी सिस्टम, फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रॉम योर टीचर्स, आगे का एजुकेशनल एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें एक एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को ध्यान में रखकर हमें लर्निंग करवाई जाती है। एंड हमारे जो कंपेनियंस हैं दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। हम अगर साइंस में बात करें तो साइंस के जो क्वेश्चंस हैं हमें मजबूर कर देते हैं क्रिटिकली सोचने के लिए। सो दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। Hello guys. So I've seen some questions like blueprint of the STEM, and I'll tell you about it in details. So अगर हम blueprint करें STEM की, like पूरे in detail के बारे में बात करें, तो basically उसमें सबसे ज्यादा मैथमेटिक्स रोल पे करता है। मैथमेटिक्स में आपके इंपॉर्टेंट हो गया ट्रिग्नोमेट्री, अल्जेब्रिक एंड आपका आ गया व्हाट डू वी कॉल इट, ट्रिग्नोमेट्री एंड अल्जेब्रिक के साथ आपका बेसिकली मेंसुरेशन आता है सबसे ज्यादा, अकॉर्डिंग टू व्हाट आई फील, बिकॉज जब मैं पिछली बार गई थी तब उसमें मेनली मेंसुरेशन के क्वेश्चंस थे, एरिया फाइंड करने वाले थे, एंड अबाउट ट्रिग्नोमेट्री के दो चार क्वेश्चंस थे, एंड further questions were also there related to maths. Algebraic वाले काफी सारे होते हैं, the terms and others. And फिर हम बात करते हैं लाइक साइंस के, जो साइंस से रिलेटेड भी उसमें क्वेश्चंस होते हैं, बट बेसिकली उसमें लॉजिकल रीजनिंग उसमें काफी सारी होती है, जैसे कि आपको नॉन वर्बल एंड वर्बल वाली जैसे मैंने बता रखी है, आपको ह्यूमैनिटीज वाला जब मैंने एक्सप्लेन किया था तब मैंने आपको बताया था उसके बारे में। तो वैसे ही रीजनिंग आपके में काफी से नॉन वर्बल एंड वर्बल रीजनिंग से आती हैं, एंड बेसिकली उसमें ना लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है, क्या कहते हैं स्टेम वाले में, उसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, एंड साइंस से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। एंड फिर कुछ बच्चे पूछ रहे हैं अबाउट द पासिंग एंट्रेंस मार्क्स। एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से इज दैट आपको आपके प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है, एंड स्कूल से कितने फॉर्म से करा है उसके हिसाब से, लाइक कोई पासिंग मार्क्स नहीं होते, बट आपको लाइक उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर करना होगा टू बीट द कॉम्पिटिशन। आपको कॉम्पिटिशन बीट करके आना होगा, पासिंग मार्क्स इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ। थैंक यू। So hello guys once again. So yeah, it's me again. So देखो अभी अभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के दिमाग में ये सवाल तो आया होगा कि ये इतनी सारी चीजें आ रही हैं, DBSE और मतलब SOSC, और मतलब कितना क्योटिक हो जाता होगा ना हर किसी के लिए मैनेज कर पाना, या फिर उस चीज को कौन देखता है और कैसे क्या करना है, हैंडआउट्स देने हैं या ऐसी या फिर कोई आगे से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो सभी बच्चों तक पहुंचानी है। तो ये काम MYP कोऑर्डिनेटर, हम मतलब हर एक स्कूल में एक एक MYP कोऑर्डिनेटर होती है जो डायरेक्ट IB से रिलेटेड इंस्टीट्यूशन से या फिर हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन, हमारे लर्निंग पार्टनर्स जो हैं उनसे कनेक्ट रहती हैं और हमारे स्कूल को उनके बारे में बताती रहती हैं या बताते रहते हैं। तो इनका एक बहुत बड़ा रोल है इन आवर स्कूल or in any school, and the one who talked to you or interacted with you in starting, Miss Pooja Gupta, is our MYP coordinator in our school, SOSC Sector 17. So it's really a tough job. So I really appreciate her for that. Hello guys once again.
and I am here to tell you more about STEM paper. सो आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये डाउट बना होगा कि मतलब स्टेम कैसा ही आता है, मतलब किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरह का बेस होता है, क्या क्या उसमें पढ़ के जाना होगा, क्या ऑफिशियल सिलेबस है, और क्या क्या मतलब हम लोगों को हेल्प कर सकता है टू कंप्लीट द पेपर एज सून एज पॉसिबल व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन रूम. तो बेसिकली अगर आपको करना है ना स्टेम, तो मेन चीज जो उसमें आती है विच इज मैथमेटिक्स. एंड मैथमेटिक्स में आई थिंक यू ऑल आर इन 8th क्लास. सो आप लोगों ने, आई एम श्योर दैट एनएनएमएस का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा. तो एनएनएमएस के एग्जाम जो आपने दिया होगा, तो मैथ्स एंड साइंस जो आती है, मैथ साइंस एंड रीजनिंग कम्स फ्रॉम दैट एग्जाम ओनली. मतलब मेन जो बेस होता है मैथ्स एंड साइंस का, वो उसी एग्जाम से होता है विच इज एनएनएमएस. एनएनएमएस से आप लोग मैथ्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑल्सो यू कैन रेफर टू एनटीएससी पेपर्स विच यू कैन गेट ऑनलाइन. तो वो भी आप लोगों की काफी हेल्प कर सकते हैं. एंड मेन थिंग जो आपको फोकस करना है वो है मैथ्स, बिकॉज लास्ट ईयर जब हम लोगों ने एग्जाम दिया था, देन देयर वर 45 क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स अलोन व्हिच वर द मोस्ट इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट. तो मेन फोकस जो है वो मैथ्स पे है. मैथ्स में भी ज्यादा जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं नंबर सिस्टम से, व्हिच इज एन 8th क्लास. नंबर सिस्टम्स एंड स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स एंड मेंसुरेशन इज आल्सो देयर. सो मेन फोकस जो आप लोगों को करना है वो इस पे करना है. एंड अगर हम लोग साइंस की बात करें, तो साइंस की बायोलॉजी में आप लोगों को मेन फोकस करना है, बिकॉज मेन क्वेश्चंस जो आते हैं वो बायो से आते हैं, फिजिक्स पे भी आते हैं. सो एंड रीजनिंग का आपको जिया ने बता ही दिया था, सो यू कैन रेफर टू दैट ऑल्सो if you need to clear, if you want to clear the exam of STEM ASOSC. Thank you guys. So, hello guys, welcome again. So, many people have been asking in the chat and all कि खाली 8 का सिलेबस आएगा, 6 7 का भी सिलेबस आएगा. सो बेसिकली मैं यही कहना चाहती हूँ दैट आप अपनी 8 स्ट्रॉन्ग कर लो, तो चाहे वो ह्यूमैनिटीज है या फिर आपका स्टेम है, आप इजिली पास कर लोगे. आपको बस अपना 8 का सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको स्ट्रॉन्ग कर लेना है. तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट क्या आप भूल गए हो. 8 का ध्यान रखिए, क्योंकि जब मैं पिछले बार गई थी, ज्यादातर जो मेरे क्वेश्चंस थे एग्जाम्स के वो सारे 8 के ऊपर ही थे. एंड जैसे कि मैंने स्टेम के बारे में बताया कि दैट ये इंपॉर्टेंट है. कुछ बच्चे मेरे से लाइक ह्यूमैनिटीज का भी पूछ रहे हैं दैट क्या क्या इंपॉर्टेंट इन द कमेंट बॉक्स. सो व्हाट आई वांट टू से इज दैट ह्यूमैनिटीज से तो बेसिकली एसएसटी ही होता है. एंड आपको इंग्लिश और थोड़ी सी रीजनिंग आनी चाहिए, देन यू आर प्रिपेयर्ड फॉर ह्यूमैनिटीज. सो बेसिकली आपको फोकस ही एसएसटी पे करना है ह्यूमैनिटीज के लिए, क्योंकि बेस्ड ऑफ उसी पे है. एंड लॉजिकल रीजनिंग आपको आनी चाहिए, यही ह्यूमैनिटीज के लिए बेसिक. थैंक यू. So I am here again, Yashasvi, briefing you all about the NYP coordinator मैम जो हमारी मिस पूजा गुप्ता मैम है, उनका स्टूडेंट्स के साथ क्या रोल है. शी इज़ द वन जो हमें हमेशा एनकरेज करती हैं नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में, मोटिवेट करती हैं हर चीज़ में, हमें पुश करती हैं कि वी शुड ट्राई दिस ऑल्सो दैट ऑल्सो. जहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ नहीं कर सकते, बट शी सेज कि हमें वो चीज़ करनी चाहिए, बिकॉज ये वी गेट टू एक्सप्लोर थिंग्स, हम जितना करना चाहें. और अदर देन दैट शी इंश्योर्स कि प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से हो, स्कूल में स्मूथली सब कुछ चले, स्टूडेंट्स को गाइड करती हैं. वो एज अ कोऑर्डिनेटर ऑल्सो शी गाइड रियली वेल. वो हॉलिस्टिक अप्रोच बेसिकली रखती हैं, वो हॉलिस्टिक लर्निंग को फैसिलिटेट करती हैं. और हर मेजर वेपन इज टू कम्युनिकेट. वो स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करती हैं, उनकी प्रॉब्लम समझती हैं, उनको एनकरेज करती हैं, मोटिवेट करती हैं. तो आप ये चीज़ तो भूल ही जाओ कि आपको अब प्रॉब्लम आने वाली है इन एडजस्टिंग environment like DBSE का switch में आपको प्रॉब्लम आएगी, या फिर ऐसा कुछ भी लर्निंग एनवायरमेंट में, बिकॉज योर बडीज आर हियर, योर कोऑर्डिनेटर आर हियर, सो यू आर मोस्टली यू आर हार्टेडली वेलकम टू ASOC Sector 17. थैंक यू. हेलो गाइस वंस अगेन. तो आई एम गेटिंग लाइक डाउट्स कि क्या है लाइक रीजनिंग में. सो बेसिकली रीजनिंग मैंने आपको ब्लूप्रिंट में भी बताया था दैट रीजनिंग के एग्जांपल्स मैंने आपको बताया था. इफ ए इज दैट मदर ऑफ बी एंड बी इज द सिस्टर ऑफ सी, कन्वर्स द रिलेशनशिप बिटवीन सी एंड ए. ये वाला रीजनिंग हो गया आपका. और जो कोड लैंग्वेज होती है लेटर्स एंड नंबर्स वाली, जैसे कि इफ
teacher stands for PVPCX. Then what would principal stand for? जो code language होती है, and जो numbers वाली भी code language होती है, जैसे if teacher stand for 67398, then what would principal stand for? ये वाले भी reasoning हो गया. And there is also a reasoning type of thing that आपको एक triangle दे दिया जाएगा, उसमें बीच में आपको like एक फिगर दी जाएगी, उसी से मैचिंग तीसरी फिगर दी जाएगी, तो आपको लाइक थर्ड या फोर्थ फिगर फाइंड करनी होगी. फिगर्स फाइंड वाला आएगा. एंड मिसिंग नंबर्स, मिसिंग लेटर्स, मिसिंग फिंगर्स, मिसिंग फिगर्स, ऐसे आपको रीजनिंग में आते हैं. यही है वर्बल एंड नॉन वर्बल इसी के अंदर आ जाता है. एंड क्लॉक टाइमिंग वाला जो आपको प्रिपेयर करना होता है, क्लॉक टाइमिंग वाला, मिसिंग लेटर्स एंड ये वाला होता है. एंड जैसे कि ऑड वन आउट हो गया, जैसे CVX, EWY इन बोथ, एंड WXY एंड JCZ, इनमें ऑड वन आउट क्या है, नंबर्स में ऑड वन आउट क्या है, ये आएंगे रीजनिंग में बेसिकली. Guys, like, welcome. Hello guys, once again. So इतना like बोलने के बाद भी that if you're having any doubt, why ASOSC sector 17, इतना बताने के बाद भी अगर आपको like doubt है कि ASOSC sector 17 ही क्यों, जैसे कि केशव ने भी पहले मेंशन किया था, अगर आप STEM के लिए जाते हैं तो we already have दो स्टूडेंट जो पहले ही आगे वाली फील्ड में जा चुके हैं. बायोलॉजी वाली नीट में, CUET में, जी में हमारे काफी सारे बच्चे गए हैं जो ASOSC sector 17 के. तो स्टेम में भी जाओगे वो भी अच्छा है. एंड देन CUET के काफी सारे बड़े पोस्टर्स पे हमारे यहाँ से बच्चे गए हैं. सो ASO सेक्टर 17 that could be a reason too. Okay. And हम बात करें कि adjustments and all, यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा मतलब सभी फ्रेंडली हैं, टीचर्स एंड इवन our MYP coordinator पूजा मैम is also friendly. आपको किसी चीज के डरने की बात है ही नहीं. So I just want to say that like there is nothing to worry about. Yes. Thank you, everyone. Thank you, students. Now I would like to ask our OSD sir is there, OSD ASOSC Sudhanshu sir is there. I would like to ask him to express his views and share his insights. Sudhanshu sir, please. Am I audible? Yes, sir. Okay. Good evening, one and all the participants who have gathered here for this wonderful concept of webinar hosted by Sector 17 Rohini, ASOSC. First of all, I would like to congratulate each and every participant, including your teachers, your HOS, and all the DBSC personnel. Secondly, I feel extremely regretted that I have joined a little bit late, though the show was going on. There was some technical glitches. That's why I could not join you. Yet, yesterday's webinar was attended by more than 500 students, as well as parents, as well as all other stakeholders across Delhi, NCR. And today, as a school, Sector 17 Rohini has hosted this webinar to sensitize the student about the stream of humanities and the newly introduced stream of STEM in class 9th. Since this school has been opened as an SSC of Humanities initially, and this year for 2024-25, we have decided to open another stream, that is STEM for class 9th, and the whole team of SSC Sector 17 is really working very hard towards the registration and of the students, and they are conversing in the nearby schools for this year's admission outreach program. And I'm quite optimistic that the number will
they will break their own record and outnumber of last year's admission registration from Sector 17 Rohini. And one more thing I would like to add, that I have visited these schools many a times, and I found that the environment of the school and the ambience of the school, which has been visualized and conceptualized in our DBSE and in our SOSE's conception, is rightly matched here. I have personally talked to students and found that many of the students who earlier were in public schools, they were studying in the public school in the nearby neighborhood of Sector 17 Rohini, uh, left their public schooling and they have joined ASOSE in class 11th. When I asked them the reason just to leave those reputed schools and join this school, the government set up school, then they said that one, the fees structure was very high over there, and in comparison of the fee structure in our system, fee structure is not there. We are only encouraging the student towards studies, and we are charging not a single penny from the students. This is the beauty of this ASOSE system, that the students are given the subsidies like in the uniform, by purchasing the books, and all the government facilities are provided here. This is one of the unique government system and redefining the education system of 10+2 as per the guidelines of National Education Policy 2020 and as per the visionary leadership of Government of Delhi and other knowledge partners who are associated with us. I would like to tell you, as you were told by the previous speaker, that we have associated in humanities with two knowledge partners, in fact, three knowledge partners. Ashoka University, one of the major knowledge partner of us, who are preparing syllabus for us for class 11th in 11 subjects. And Tata Institute of Social Sciences is preparing. It is also one of our knowledge partner, one of the reputed higher education institute and esteemed in social sciences, esteemed Institute of Social Sciences, and they are preparing the curriculum for specialized subject that is called World of Work, and this subject is also transacted only in ASOSEs. No other system of board education in India is practicing the transaction of specialized subjects. And as it was told by the previous speaker, this is specialized syllabus or curriculum has been introduced to sharpen the skills of the students, especially observation skills and listening skills. And one more point I would like to add that that was incompleted, that when I talked to those students that why they have left those public schools, and they first told that fee structure was cumbersome to them and it was very much tight for their financial setup, as the students usually come in this system are from lower middle class or middle class families, and for them to afford such robust structure of fees is really burdensome, or you can say that the increasing cost of education is unbearable for that section of the society. And from that point of view, Government of Delhi has come upon with this unique idea of schools of specialized education, because here our vision is that, our thinking is that quality education is the right of each and every child, and this is mapped with the right to education of the students also. And our leadership is stressing upon the quality education. That was the need of the hour, and it was not uh, thought upon in the government setup. Now it is one of the reality which we are carrying forward for the last 2 years. This is our 3 years that we are ushering in the year 2024-25. And I would like to, I'm delighted to share one more information with you, that earlier
only 12 schools were affiliated with that humanities stream of ASOCs. Now the number is increased, and now our family is increased by 17. Now 17 ASOCs will be operated in humanities, and these schools are located in every corner, in every place of Delhi, be it in north side, south side, central side, or any of the side, you will find the presence of these SOCs. So I would like to suggest the aspirants, the participants, and those students who are dreaming to be a part of this system, that they should work hard, and they should go through the syllabus for the aptitude test, because our aptitude test is divided into two parts. Part one is of written test, and part two is group discussion, and the students have to pass in qualify both of these. Then only they will get the chance to realize their dream and to study in these schools. And secondly, those students who have left the public school system, they said that they had no choice other than going through that syllabus of the NCRT, which was monotonous for them. And here in Ashoka University, they are designing and redefining the education in a new form. I have observed political science period, and students informed me, as well as I realized also, that the instances that they incorporated into the syllabus are contemporary with the students, so they have good understanding and better comprehension of the things around them, and they can understand the world around them in a better way. And our teachers are empathetic, our teachers are so much adept in the skill of teaching. So a classroom is nothing like a conversation room. And here I found that students took deep dive and interest into this. And this is the first and the foremost condition for learning to happen. So here learning is happening in our ASLCs. So if you want to learn really something, then join us. And I would like to conclude by these two sentences, that you have mission and we have vision. Let's make a winning combination. Thank you. Thank you so much, sir, for explaining in detail about the vision of DBSC and ASOSEs. Now we have Aishwarya ma'am, program lead of ASOSE Humanities at DBSC. Aishwarya ma'am, please unmute yourself and Hi, Aishwarya ma'am. everyone. Yeah. Yes, Hello, yes. ma'am. Can you hear me? Good evening, everyone. Good evening to all the students who've joined the online webinar today. Um, First, I think great presentation made by all the students. Thank you so much for explaining humanities and STEM along with foundational subjects offered at SOSC DBSC in detail. Really great work to the entire team. So good job, kudos to all of you. I think to the all the aspirants, what I would recommend and what I would like to say is that SOSC at the end of the day is an aspirational school where we would prepare you and where we would guide you in terms of your career, for your goal, and for higher educational pathways. Please do apply if you haven't applied yet. And to all the students from SOSC, Sector 17 Rohini, do encourage your juniors and people around your residential area to apply for SOSC Humanities. You are the ambassadors of SOSC at the end of the day. And do encourage your juniors to apply for the school, guide them through the admissions process, how to fill the form, and what would come on the aptitude test as well. The syllabus would be soon uploaded on the website. So do tell your juniors to keep checking the website constantly for all the updates. Everything would be uploaded on the website itself. And very soon, the blueprint that was shared on yesterday's humanities webinar would be uploaded on the website as well. Once again, we would have two rounds. First one would be the aptitude test, which would be based on class 8th aptitude.
and then we would have the second round, which would be the group discussion, where all the current affair issues would be discussed or given as a topic. And then finally, once you've cleared round one and round two, the weightage is 70 is to 30. And then the merit list is generated, and you will get admission to your nearest SOSC Humanities school. And already the team has done a fantastic job of explaining the two specialized subject, which is systems and society, and world of work. World of work continues in class 11th with all the module options like mass media, legal studies, and in the coming term we would be offering three more modules, which is teaching and aptitude, mapping and visual representation, research and critical thinking. And you would specialize in one of the world of work modules in class 12th, along with Ashoka subjects, English and interdisciplinary studies, along with three electives. And you would be studying foundational subject plus two specialized subject in grade 9th and 10th. Um, so all the basic information has been covered by the team. Thank you so much for doing that. And like Sudhanshu sir already mentioned, our family has grown from 12 to 17 this year. So there are 17 schools in humanities for that matter. And so goes for STEM as well. Rohini, which was a humanities school, will also now offer the specialization of STEM as well. For the information related to all the SOSCs, one can go to the edudel.com and check the SOSC website out. All the information to the nearest SOSC knowledge partner curriculum design is on our website. And if any of you have missed out on the webinar, I think this would be uploaded, and the recording would be shared with everyone else. So that's it from my side. Thank you so much for organizing this. This is an example of a student-led initiative at SOSC Humanities, and a great work done indeed. Thank you so much, everyone. Thank you so much, Aishwarya ma'am. This is your initiative only. We only try to convey more and more. Aishwarya ma'am, some students have question about negative marking in written exam. Can you please highlight about that? Hi everyone. There would be negative marking in the aptitude test. It would be in the ratio of 1:4. So the total marks for the aptitude exam is 240. And if you do an answer wrong, it would be 1:4. So आपने 4 क्वेश्चन किए हैं, उसमें से एक गलत होता है तो मार्क्स कटेगा. The ratio 1:4 है. So 25% negative marking. Right? So is that clear to everyone? There would be negative marking, and it is in the ratio of 1:4. थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। आज का वेबिनार यहाँ ख़त्म होता है, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है। अभी भी हमारे पास 4 to 5 डेज हैं। 22 दिसंबर इज़ द लास्ट डेट। सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, वो अप्लाई कर दें, और जिन्होंने अप्लाई कर दिया है, वो तैयारी शुरू कर दें। अगर किसी को कोई भी क्वेरी है, वो स्कूल विज़िट कर सकते हैं। आस-पास के जो भी एरियाज़ हैं आपके, आपने जहाँ पे अप्लाई किया है, वहाँ पे आप स्कूल विज़िट कर सकते हैं। हमारा स्कूल भी आपके लिए ओपन है। अगर आपने अप्लाई नहीं करा है हमारे स्कूल में, तब भी आप आके विज़िट कर सकते हैं। वी हैव नो ऑब्जेक्शंस फॉर दैट। सभी को ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम्स। थैंक यू सो मच। Thank you, everyone. One more Thank thing. you, everyone. Prepare well. One more thing, ma'am. If you have any doubt, in our school, हमारे स्कूल में एडमिशन डेस्क भी है, मतलब वहाँ पे MYP कोऑर्डिनेटर जो हमारी पूजा मैम है, who was taking our class, उन्होंने एडमिशन डेस्क सेटअप करवाया है. So you can visit to our school in any of the school timings to counter your doubts. You will get to know more about ASOC when you will come to our school. Thank you so much, Akesha.
Thank you to everyone.